पढ़ के आया करिए तिवारी जी, इस तरीके से नहीं चलेगा। हमें ही पूरा पढ़ना है, हमें पूरा करना है, तो आपकी जरूरत क्या है? हम चेम्बर में बैठ के 10 फाइलें उठा लिया करेंगे, कर दिया करेंगे। My lord, 1 week's time, my lord. आपका शुभ नाम बताइए। Arvind Singh. श्री अरविंद सिंह, प्रेज फॉर टाइम टू प्रिपेयर एंड आर्ग्यू दिस केस। टाइम क्यों चाहिए लेकिन आपको? My lord, ये लीगल एड से मिला है, इसमें एग्जिट डॉक्यूमेंट नहीं मिले। अच्छा, श्री अरविंद सिंह submits that this case is allotted to them through legal aid. Full stop. He submits that documents have not been supplied. Full stop. Let affidavit of the secretary, legal aid, High Court legal services से मिला है ना? जी। High Court legal services be obtained that why documents were not supplied, and if documents were supplied, then cogent evidence be produced so that appropriate action may be taken against the counsel who is making this statement. And if documents were not supplied, then Registrar General shall take action against the concerned Secretary Legal Aid who had failed to supply the documents while supplying the memo of appeal, while supplying the instructions for filing of the appeal. Chaliye, let needful be done within 7 days. List after 2 weeks. अगर आपकी बात गलत पाई गई तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी. You will be permanently, and इसमें लिख लीजिए, आप ही लिख रहे थे ना ये. If it is found that the statement given by the counsel is incorrect, then he should be permanently blacklisted from appearing for legal aid, and a note should be sent to the bar council that such counsel shall not be entitled to appear for legal aid or for any or as an amicus curiae to be appointed by court, and this note be circulated to all the benches. My lord, इसमें जो काउंसिल है मेन वो बताएंगे ना. देवेंद्र शुक्ला जी है. हाँ, देवेंद्र शुक्ला का नाम डाल देना. देवेंद्र शुक्ला का आर्ग्यूइंग काउंसिल, देवेंद्र शुक्ला शैल बी ब्लैकलिस्टेड. चलिए जाइए. Shall not be entitled to appear for legal aid or for any or as an amicus curiae to be appointed by court, and this note be circulated to all the benches. My lord, इसमें जो काउंसिल है मेन वो बताएंगे ना. देवेंद्र शुक्ला जी है. हाँ, देवेंद्र शुक्ला का नाम डाल देना. देवेंद्र शुक्ला का आर्ग्यूइंग काउंसिल, देवेंद्र शुक्ला शैल बी ब्लैकलिस्टेड. चलिए जाइए. All the cases will be taken, all the cases allotted to Shri Devendra Shukla, Devendra Kumar Shukla shall be taken back, and he shall not be entitled to fees in any matter from legal aid.